We welcome you all. Thank you so much for your gracious presence. Before we proceed with the deep Prajwalan, I'd like to say a few words about late Guruji Acharya Parvati Kumarji. Pujaniya Guruji Nritya Maharishi Acharya Parvati Kumarji was a great legendary exponent of the arts who served the arts for 90 years. Through his lifetime and even after, through his senior-most disciple, Dr. Sandhya Purichaji, Guruji's work lives on. I will hand over the mic to Sandhya Tai later on, who will talk more about Guruji. But before that, I request our esteemed guests to please light the lamp, and in this way we officially inaugurate the Acharya. She recited the Guru Sutra, accompanied by her students and of course Sunil Bhai and Vaishnavi. After that, we now have the Dvitiya Parasha, where we have the official inaugural ceremony. I now request our esteemed guests to please light the lamp and begin Acharya Parvati Kumar Chandra Shatabdi Mahotsav. गुरुजी आप गुरुमा आप भी आइए जी। 2 मिनट एकदम गरम थे यहाँ कर आया ऊपर चीज Thank you. Thank you. Request you to please take your seats in the audience, please. आइए गुरुजी आप बीच में आइए गुरुजी आप बीच में थैंक यू वेरी मच। Today's program is a lecture by Dr. Puru Dadit ji on Natya Shastra in reference to Kathak. It is also the culmination of the series. Tomorrow we have a convocation ceremony for all the students who attended the one-year program on the same topic. I now hand over the mic. I now request for the government of private responsibility, Guru Dr. Padma Sharma ji. I request Padma ji to please. I now request Anitai to felicitate Darshana Ben. And last but not the least, Guru Dr. I now hand over the mic to Sangatai to share a few words with us. असंही छोटंसं माझी मनोगत होतं ते मी मराठीत व्यक्त केलं आणि अभिव्यक्त करताना अगदी रडले देखील. आणि ती अभिव्यक्ती वेगळी होती, तो सात्विक भाव होता आणि अगदी इनफॉर्मल बोलणारे खूप फॉर्मल बोलायचं नाही, कारण हा जो अख्खा सोहळा आहे तो आपण आपल्या परिवाराचा सोहळा आहे. पार्वती कुमारांनी जे परिवार निर्माण केलं, ज्याच्यातनं सगळ्या जे वटवृक्ष निर्माण झालेले आहेत त्याच्या आपण सगळ्या शाखा आहोत, वेगळ्या वेगळ्या शाखा आहोत, इकडे तिकडे फिरणाऱ्या. आणि कोण फुल आहे, कोण पुष्प आहे, कोण पान आहे, अशा रीतीने आपण सगळे एकमेकांना जुळायचा प्रयत्न करणार आहोत. हे 100 पलाश किंवा 100 पाकळ्या ह्याच वेगवेगळ्या पाकळ्या ज्या वेगळ्या वेगळ्या जागेवर आहेत, तिथे तिथे जाऊन पूर्ण कमळ कसं खिललं आहे ते आपण बघणार आहोत. मुंबईत आणि महाराष्ट्रात हे एक 10 तरी किंवा 20 तरी शोज होतील, पण खरे शोज जे आहेत ते ऑल ओव्हर इंडिया आणि इंटरनॅशनली गुरुजींचे शिष्य आणि त्यांचे शिष्य आणि त्यांचे शिष्य त्यांनी जे एक विश्व वेगळं निर्माण केलं आहे त्याच्यासाठी अशी ही गुरु मानवंदनेची कल्पना आहे. आणि त्याच्यासाठी
दरवेळेला पद्मश्री सुनील कोठारीजी, पद्मश्री दर्शना जवेरी यांनी गुरुजींना माझ्या अगोदरपासून पाहिलंय. मी खूप लहान होते, म्हणजे मी माझा गुरुजींचा सहवास 1978 पासून, ह्यांचा सहवास 1940 पासून आहे. सो हे त्या काळापासून त्यांनी गुरुजींना पाहिलेलं आहे. म्हणजे मी गुरुजींविषयी खूप बोलण्यापेक्षा मला असं वाटतं की सुनील बहिणी किंवा दर्शना बहिणी एक दोन वाक्य जरी सांगितली तर तुम्हाला त्यांचा अनुभवाचा कळेल की त्यांनी काय अनुभवलंय. आणि आम्ही जे काही मला म्हणाले की संध्या तू बोलायची गरजच नाही, कार्य बोलतं. आत्ता सुनील भाई येताना माझ्याशी गाडी बोलले, काय बोलायची गरज आहे की गुरुजींनी असं शिकवलं, गुरुजींनी हे शिकवलं, काही नाही. एक पुस्तक रूपाने ठेवली, कारण तू काय कार्य करतेस त्या कार्यावरूनच कळतं की खरं शिक्षण काय आपल्याला मिळाले किंवा गुरु शिष्य परंपरेमध्ये आपण आज पुढे काय घेऊन चाललोय. आणि ह्याच्यावरनं सुनील हा सुनकारा आमच्याकडे एक 4-5 वर्ष कथक शिकला, MA केलं, शिकला तर नाही, MA केलं. आणि त्यावेळेला त्यांनी आपला कोर्स ज्याच्यामध्ये संस्कृत ग्रंथ हे डोक्यावर घेतलं, कारण तो स्वतः रिसर्चर आहे, तो स्वतः डॉक्टरेट आहे. आणि त्याला खरं मुळात कळलं की हा कोर्स कशासाठी आहे. शास्त्र आणि संप्रदायाचा जो एक एकत्रित अभ्यास करायची जी वृत्ती गुरु शिष्य परंपराने दिली आहे, आणि त्याच्यातनं त्यांनी सांगितलं की गुरुदत्तींचं नाव कोणी ऐकलं नाही, सगळ्यांनी ऐकलं होतं. पुस्तकं सगळी आपण तीच वापरतो कथकमध्ये, पण तो कोर्स तयार करून त्यांच्या मागे लागून करून घेणं हे सुनील सुनकारा आणि पौलमीच्या खरं म्हणजे झालं. आम्ही निमित्त आहोत. मी म्हणा, भावनाताई म्हणा, तो भावनाताईशी बसतो, कोर्स करना है, ऐसा करना है, पूरा ये चार्ट होगा, ये ऐसे होगा, इतना ऍडमिशन, सगळं ते लोक करतात, ते लोक बसून. सो ह्या सगळ्या कोर्सेस मध्ये एका वर्षात नाट्यशास्त्र शिकता येतं का? नाही. एका वर्षात कुठलंही शास्त्र शिकता येतं का? नाही. ऑनलाईन बसून शिकता येतं का? नाही. समोर गुरु हवाच असतो. आणि न्यू टेक्नॉलॉजीच्यामुळे हा गुरु तुमच्या समोर बसलेला आहे, ते बोलतायत, तुम्ही बघू शकता त्यांना, तुम्ही ऐकू शकता त्यांना, तुम्ही फोनवर विचारू शकता त्यांना. अशी वेगळी सोय करून वेगळा असा आगळा कार्यक्रम करायचा प्रयत्न केला आणि तो खूप सक्सेसफुल झाला. आणि आता तर गुरुदत्तींचे वेगवेगळे कोर्सेस सगळीकडे ऑनलाईन सुरू झाले आहेत. आणि मी त्याच्यासाठी खरंच सर्फोजिलाचे भोसले सेंटरचे सगळे ट्रस्टीज आणि भरत कॉलेजच्या ट्रस्टीजची आभारी आहे की त्यांनी आम्हाला हा कोर्स सुरू करायला परवानगी दिली, आणि त्याबद्दल मी त्यांचे खूप खूप आभारी आहे. आणि शर्तेसाठी पद्माजी बद्दल खूप बोलायचं नाही, 2 शब्दात बोलायचं म्हणजे अत्यंत प्रेमाळ व्यक्तित्व असलेली आणि अत्यंत जमिनीवर पाय असलेली व्यक्ती, ज्यांनी कधीही मला गाडी पाहिजे, मला घोडा पाहिजे, मला 13 प्रोग्राम है, मैं बहुत जाऊंगी, म्हणजे असे आशीर्वाद देणारे गुरु आज जिवंत आहेत. आणि परीक्षक म्हणून पदवी परीक्षेला आले मुलांना ते म्हणतात नाही संध्या फेल नहीं करना, उलट उभे ठेवतात, देखो आपको ये नहीं आता है, आपको सीखना है, आ जाओ घर पे मैं सिखाऊंगी. फीस नहीं घेत त्या, घरी जाऊन शिकवलं तर फीस पण नाही घेत, तुम आओ, ये तुमको नहीं आता है. तो ये जो है ये परिवार है हमारे पास गुरुओं का, जितना ले सको प्लीज लीजिए, जरूर लीजिए. और इसके बाद मैं सुनील भाई से विनती करूंगी कि एक 2 शब्द बोले इनॉग्रेशन के बारे में, 2 शब्द गुरुजी के बारे में और 2 शब्द अगली पीढ़ी के बारे में. धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. This morning we had gone to the college where there was Prarthana, Guruji's Archana and all. It was very heartening to know that because these sanskars are fast disappearing. I was telling Darshana and Uttarana that we see that this entire Samaj which has gathered together, those young girls who have come today in the morning for the Prarthana, these are made sanskar. मला स्वतःला वाटते महाराष्ट्रामध्ये फार डीप इन्व्हॉल्वमेंट आहे, फार संस्कारी लोक आहेत महाराष्ट्र. त्यांच्या घरी पूजा होते, त्यांच्या घरी इफ यू आर ऑल्सो मकर संक्रांती तर गोड गोड घ्या, इथे गोड घ्या, गोड गोड बघा.
Now that sanskar is very beautiful. So if Sandhya carries on, we will always support her. Darshana also came. Our Guru Vipin Singh Ji was there. So when we think of Guru Parvati Kumar, other day I was in Baroda, I was going through my old collection. I came across one of the letters where Guruji had made a speech and gave me the speech when he had released the book Tanjore Prabandha. And it was wonderful to know that Guruji, long ago in 1958, Darshana, when we all were in Sangeet Natak Academy dance seminar in Delhi, I'm talking of 1958, I'm already 85-year-old. इतने वर्ष पहले गुरुजी ने देख तेरी कंपनी प्रेजेंट किया था. That was the very first contemporary modern dance. There was Sudarshan Dheer who was playing the role of policeman. The policeman has to give instruction, left से जाओ, right जाओ, आगे जाओ, पीछे जाओ. He did the entire thing in Kathak. It was so wonderful that to watch a young man, Sudarshan Dheer, doing Kathak and playing the role of policeman. It was a great production that he had done. I had seen some of his work earlier with Babul Damubhai Javeri, and they are producing this Korea of India. Guruji had a very wide range, including one dance film star called Usha Kiran. गौना नामी फिल्म थी, तो उन्होंने बताया कि आप देखो कैसे मैं डायरेक्शन देता हूँ. गुरुजी हैड लव फॉर द चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन फेस्टिवल उन्होंने किया था, उसकी पहली स्टोरी की थी. उनका जो ज्ञान था, तो आई वॉज एट दैट टाइम यंग एंड स्टेइंग एट सोनावाला बिल्डिंग 7C where Sona Guruma was staying. I would go with them to watch Guruji's class. Guruji had a tremendous understanding of Natya Shastra, and not that time Abhinay Darpan. Abhinay Darpan, all the shlokas he made Sandhya learn by heart. At that time Suchita Pide was learning from Guruji, and Guruji was explaining very beautifully. Rohini Bhate, Maya Kulkarni, they were early senior dancers. They all used to come to Guruji. The desire to know from a great Guru like her to come and learn from him. Guruji's intelligence or question, Kim Karomi, what should I do? He wanted to know even the root of the word Natya. When Padma Subramaniam came somewhere in 1958 or 60 with her work on Karana, and she had brought the slides of Chidambaram temple. But Padma had learned all the 108 Karanas by heart, and she had done the commentary of Abhinav Gupta. Guruji also knew this thing. So when Padma demonstrated something, Guruji, just in order to double check whether she knows or not, very confidently she demonstrated, and she came and touched Guruji's feet. Guruji said, you have done a great job. Even I had not known, I read the commentary of Abhinav Gupta, that you can compose this dance in a manner, what is called Bharatamritya she had done. Now, this range of Guruji is something which you don't know. Fortunately, Sandhya has brought out this book, and those who do not must get the copy. There are a series of photographs are there. Early days when Guruji was dancing, we were learning from Chandrasekhar Pillai. I remember I had gone to Bharati Vidya Bhavan to see how Guruji was learning Bharatanatyam in those years. I had a great advantage that in those days there were not many people like me who had access to this thing. With the Javeri sisters, 6 Gurus, Sushil Bhai, then our Damubhai Javeri, Malti Ben Javeri, going to Dr. Pranayalal Munshi, Lilavati Munshi. You can go to Bharati Vidya Bhavan and watch these great gurus teaching. Sunarban, Sunayana Hagari, very, very young. I remember Padma ji had done Radhe Piya Pyari. Mukund Goswami ji ne compose kiya tha, Radhe Piya Pyari. So advantage was there that at one go in the period which was a historic period in our life, one had an opportunity to understand all these things. And I am very happy that I can share this with you. I do believe that books can always be gone back to. Nowadays people don't read books, they go to Google. I have no problem with Google. You can go to Google but find out what is there. Find out about what Guruji have done. Uttara lives in New York, in the New York Public Library. She had taken me to show me how collections are kept, how we can access the material. Today, if something goes on online, you referred to about learning online. That one thing I agree with her. You can learn from online, but there is nobody to correct you there and then. I was reading last night one book by P.N. Deshpande. He has written about Kesarbai Kerkar. Kesarbai Kerkar said that technology you can learn the raga, I can teach you particular raga, but you cannot reproduce the way. I have to correct you there and then. Then only you can learn it. So there is an advantage of this Guru Shishya Parampara that directly the Guru is in touch with you and correct you. So far as this college is concerned, so far as the Guru Shishya Parampara is concerned, so far these institutions are there, I would tell young people to take maximum advantage of this thing.
what Guruji was there, and in succession, Chira today, succession, Sandhya have come, they have become gurus today. And these are the great gurus of the contemporary time, from whom the new generation must learn, as much they can learn. We are historians. We have been lucky to write down books on dance. Sometimes we are able to talk to you, sometimes in interview, sometimes in dialogue, sometimes in writing. We remember you and remind you of this thing. But you are Sakshat Hadraju. I remember in 1958 All India Dance Seminar, I first time saw Shambhu Maharaj, the great Shambhu Maharaj, uncle of Birju Maharaj. उन्होंने खुद गाया, गुरु गोविंद दोनों खड़े, गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसको लागू पाए? Who should I bow to? There is Guru and there is Govind. So I would like to bow to Guru, because Guru Govinda Dino बताए. Guru taught me who is Govinda. It's through Guru that we are going to get to the whole Paramatma. And I think these small little things which comes in Doha are carrying profound truth. Don't forget that. They all come in inheritance to you. You are very fortunate people that today you are able to meet people like them, learn something from them. I will never forget this beautiful day in the morning to see the Guru Mantra, Guru Devo, Guru Stotram. It is marvelous. Even if you look at the poetry of the Guru Stotram, you understand so much how in Sanskrit poetry, how he has said that our eyes are dark, and then with the Jnana, you have to point the eye, and then you suddenly get the beauty. What beautiful compositions are there. Sahitya is marvelous, including in all the poetry. I do believe that I have gone to dance through poetry, the images of the Kalidas. Tonight you are going to see, based on Kumar Sambhav and Rutu Samhar, Rutu Chakra, what your Kaligraph in Marathi. That is accessible. If you do in Marathi, the Maharashtrian people can access you. Still, you can see the beauty of Kalidas. Namaskar. दर्शना बहन, दो शब्द प्लीज. गुरुजी, Guru Datti ji, Vibha ji, Padma ji, Sunil bhai, Sandhya, my very dear Sandhya. It's really, I feel it's a great privilege for me to be a part of her whole project of 1 year to celebrate the birth centenary year of her revered Guru Parvati Kumarji. Sandhya is really wonderful. The way she has imbibed the great knowledge of Guruji and his work, and the way she is continuing his gharana through all her devoted, dedicated, committed students, many, many. Yes, very true. Cannot count. No, very true, very true. Students and then grand students. Yes. It's wonderful, and how she is widening the horizon of Guruji's immense work through her choreographies, through her research, publications of different books, teaching, creating college. I must say that her devotion and dedication to Guruji, Guruji's blessings are always with her, and she will definitely succeed in completing 100 programs during this year. Your blessings are always there with her. I really remember Guruji's knowledge and his creative talent, because it was similar to my Guruji, Guru Vipin Singh, in Manipuri dance. And when they used to meet, and that's why they were very close to each other. And I remember whenever I used to take Guruji, my Guruji, to Parvati Kumarji, and they used to discuss the Shastras and Prayoga, because my Guruji has also done work in the Shastras, the ancient Indian texts on dance, as well as Vaishnavite Sangeet Shastras, and correlating the oral tradition with the Shastras,
and creating new compositions, choreographies for the theatre, and the similar work Guru Parvati Kumarji has also done. So when they used to discuss, it was wonderful, fascinating for me to listen to their conversations, and I really remember going to his house many times, discussing different things on talas and shastras and which shastra, what is written, because my Guruji also used to remember what things are on which pages of which text. So it was really wonderful to be with them in that atmosphere of Shastra and Prayog, and I really wish and I hope that Sandhya will carry forward Guruji's legacy, and I really bless all the students who have been following Sandhya with their dedication and devotion and commitment to dance in their life. Thank you so much. To take this opportunity to welcome in our midst two very special guests, Guru Srimati Mandakini Trivedi ji, Senior Mohiniyattam exponent, and Srimati Malati Agnishwaram ji, Bharatanatyam exponent. Thank you so much for your gracious presence. Sangeeta, you will welcome. और ऑडियंस में जो सब स्टूडेंट्स हैं और उनके पेरेंट्स वगैरह सबको मेरा नमस्कार। मैं बहुत ही खुश हूँ कि आज तुमने मुझे बुलाया संध्या, क्योंकि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो हर एक को आसानी से मिल नहीं सकती, क्योंकि जो गुरु हैं, गुरु और शिष्य का जो इतना बड़ा तुमने वो प्रोग्राम चॉकआउट किया है 100 शोज़ का, और पूरे साल उनकी याद में प्रोग्राम करने का, वो आज तक किसी ने नहीं किया। तो मैं बहुत बधाई दे रही हूँ तुमको और आप सबको भी कि संध्या के साथ में आपने मिल के उसको बढ़ावा दिया, और ये जो आप साल भर आपने रवि जी को जो कोर्स किया है, मेरी ग्रैंड डॉटर ने भी ज्वाइन किया, तो आप कल उसको पुस्तक देने वाले हैं। हाँ, तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। और ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं खाली कहना चाहती हूँ उनको बहुत बहुत दिन दूना रात चौगनी बढ़ोतरी की कामना करती हूँ। ऑल द बेस्ट। आप लोग इतने अच्छे गुरु आप लोग को मिले हैं, तो उनका पूरा फायदा उठाइए, और जो वो करा रही हैं, सिखा रही हैं, कला की साधना करते हुए आप लोग को आगे बढ़ा रही हैं, तो उसका आप ज़रूर ध्यान रखें और उनको मतलब पूरा अपना समर्पण कर दें, तब आपको ये कला मिलेगी। ये कला बहुत मुश्किल है मिलना, जो सही सिखाना आजकल बहुत मुश्किल है। गुरु अच्छे से सिखाएं, सही चीज़ सिखाएं, वो बहुत मुश्किल है। लेकिन संध्या, तुम्हें बहुत बहुत लॉरल्स एंड ऑल माय बेस्ट विशेस। थैंक यू। लेते हुए हम जो नाट्य शास्त्र का अंतिम लेक्चर है उसकी ओर बढ़ने वाले हैं। और मैंने जब सुनील से बात की तो सुनील मुझे बता रहा था कि गुरुजी और अम्मा जी दोनों मिलके साथ में कुछ बताने वाले हैं, तो मैं भी एक्साइट हो गई कि यस, स्त्री और पुरुष से ही एक विश्व निर्माण होता है, पृथ्वी की निर्मिति भी उसी से होती है, और नाट्य शास्त्र की पूर्णाहुति भी, क्योंकि आज तक गुरुजी बोलते थे
है ना? तो सभी लेक्चर आपने गुरुजी के सुने, आज आपको विभा जी को भी सुनना है। और यहाँ पे एक पूर्णमिदम हो जाएगा नाट्यशास्त्र का, और शाम को नेहरू सेंटर का कार्यक्रम है। आप ज़रूर आइए। अगर मैं एक 15 मिनट जल्दी जाऊँ तो मुझे क्षमा करना, क्योंकि वहाँ हमने टेक्निकल रिहर्सल रखी है। बाकी सुनील और पौलवी जी संभालेंगे। गुरुजी प्लीज़। सर्वप्रथम तो मैं आज जिनकी जन्म शताब्दी हम मनाने जा रहे हैं, उन गुरुओं के गुरु स्वर्गीय पार्वती कुमार जी को सश्रद्धा नमन करता हूँ। मंच पर आसीन आदरणीय भाई सुनील कोठारी जी, दर्शनाबेन पद्मा जी, सामने बैठे हुए सब आचार्यगण और यहाँ उपस्थित समस्त शास्त्र को जानने की उत्सुकता रखने वाले गुरुजन और विद्यार्थी। सबसे पहले तो बात मैं ये कहना चाहूँगा कि कथक और शास्त्र, नाट्य शास्त्र दोनों का परस्पर संबंध जोड़ने का पहला प्रयास भरत कॉलेज ऑफ परफॉर्मिंग ये एक उदाहरण है कि जो काम कथक केंद्र को या उस तरह की संस्थाओं को करना चाहिए था, वो कार्य भरत कॉलेज ने किया है। भरत कॉलेज ने अपने नाम को इस तरह भी सार्थक किया है कि वो भरत कॉलेज ऑफ भरतनाट्यम नहीं है, भरत कॉलेज ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स है, समाहित है। और इसलिए उसमें से एक कला पर उन्होंने केंद्रित किया। यह उनके लिए और हमारे लिए गौरव की बात है। आज जो अभी संजय जी ने कोर्स के बारे में जानकारी विस्तार से दी है, आज उसका समापन व्याख्यान है। मुझसे कहा गया था कि ये समापन व्याख्यान जो है वो उसको समूह करना आज रखिए। तो भरत पुत्रों को शाप दिए जाने की कथा से मैं समझता हूं कि अब में से अधिकांश लोग परिचित हैं। फिर भी मैं इसे दोहरा देता हूं। भरत मुनि और उनके 100 शिष्य जो उनके पुत्र भी थे, वे अपनी नाट्य विद्या के ज्ञान से इतने मदोन्मत्त हो गए थे कि वे दूसरे ऋषि मुनियों की खिल्ली उड़ाने लगे, उनके ऊपर हास्यपूर्ण प्रहसन आयोजित करने लगे। इससे ऋषि मुनिगण नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि आपका यह व्यवहार ऋषि मुनियों की परंपरा के अनुकूल नहीं है, ये तो शूद्रवत है, इसलिए आप सब शूद्र हो जाएं और ये विद्या जिसके बल पर आप इतना घमंड कर रहे हैं वो विद्या भी नष्ट हो जाए। यह समाचार जब देवताओं तक पहुंचा तो उन्होंने आकर उन ऋषि मुनियों की अभ्यर्थना की और कहा कि यह विद्या बड़े कष्टों से, बड़े परिश्रम से प्राप्त हुई है और विद्या का तो कोई दोष नहीं है, इसलिए इसे नष्ट नहीं होना चाहिए। तब ऋषियों ने कहा कि हाँ, ये विद्या कायम रहेगी, लेकिन शाप का शेष प्रभाव वैसा ही बना रहेगा। इन्हें तो शूद्र होना ही पड़ेगा क्योंकि इन्होंने शूद्रवत आचरण किया। तो नाट्य विद्या तो बच गई,
लेकिन शूद्रों का बनने का जो शाप ऋषियों ने दिया वो विद्यमान था। कुछ अरसे बाद राजा नहुष ने स्वर्ग को जीत लिया। वे इंद्रासन पर विराजमान हो गए। उनके समक्ष जब उर्वशी, मेनका आदि अप्सराओं ने नाट्य की प्रस्तुति की तो उन्हें लगा कि ये जो नाट्य प्रयोग है ये हमारे पृथ्वी स्थित महल में भी होना चाहिए। उन्होंने देवताओं से प्रार्थना की। तब देवताओं ने कहा कि इन स्वर्ग में निवास करने वाली अप्सराओं को, गंधर्वों को पृथ्वी पर जाकर के नाट्य प्रयोग करना संभव नहीं है और यह उचित भी नहीं है। इसलिए तब उन्होंने कहा कि आप फिर क्या किया जा सकता है। तब उन्होंने कहा कि इन सबको शिक्षा देने वाले भरत मुनि हैं, आप उनसे प्रार्थना करिए। उन्होंने भरत से निवेदन किया। तब भरत ने अपने पुत्रों को बुलाया और कहा कि नहुष अभी हमारे राजा हैं, उनकी आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है और पृथ्वी पर जाकर वहाँ नाट्य प्रयोग करने से जो ऋषि मुनियों का शाप आपको लगा है वह उससे भी आप मुक्त हो जाएंगे। अतः राजा नहुष की आज्ञा का पालन करें। तब भरत के वे 100 पुत्र पृथ्वी पर आए और उन्होंने मानुषी स्त्रियों के साथ नाट्य प्रयोग प्रस्तुत किए। मानुषी स्त्रियों के संसर्ग में रहकर लंबे समय तक उनकी कई संतानें भी हुई और इस तरह विश्व एक ओर शाप मुक्त हो गए, दूसरी ओर पृथ्वी पर इस नाट्य विद्या की प्रस्थापना हुई।